तो हमारा एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लगभग मौजूद है, जो हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो है 78.06 उसका परसेंटेज। हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक टू आवर चैनल साइंटिफिक फेनोमेनल फैक्ट्स। आज का मेरा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेके कि उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाउ इट हैपन्स। So let us study this one thoroughly. So first of all, what fixation of nitrogen is? Here, इसमें क्या होता है? The conversion of atmospheric nitrogen or artificial nitrogen into nitrogen compounds, whether by natural or artificial means. इसमें प्रकृति द्वारा या artificially हम लोग इसको execute कर सकते हैं. All of us know that the percentage of nitrogen that present in atmosphere is about 78.06% by volume. तो हमारा एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लगभग मौजूद है, जो हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो है 78.06 उसका परसेंटेज। हम लोगों के एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा गैस होता है कि नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है हमारा एटमॉस्फेयर पे। नाउ लेट अस सी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट 78.06% बाय वॉल्यूम। However, the intake of nitrogen by plants, animals, etc., whether directly or indirectly, but it takes place continuously from atmosphere. तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है जो नाइट्रोजन को लेने का काम, प्लांट्स द्वारा, एनिमल्स द्वारा या किसी बैक्टीरिया द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं। They are supposed to be fall down of the percentage in nitrogen level, isn't it? But in fact, the percentage of nitrogen remains almost constant. ये लगभग कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स्ड ही रहता है। Why? It is because of nitrogen cycle. Did you understand? It is because of nitrogen cycle. Once again from atmosphere to ground, and it happens, it is taken or utilized by plants, animals, and afterwards it once again return back to the atmosphere. That is nitrogen cycle. That is, atmospheric nitrogen goes to the soil by natural means, through lightning, symbiotic bacteria, isn't it? And by artificial means, as ammonium compounds like fertilizers get converted into free nitrogen by denitrifying bacteria. तो इस पे आर्टिफिशियल प्रोसीजर से भी होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम कंपाउंड जो होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह है, इसमें भी हम लोगों का फिक्सेशन होता है, इसमें नाइट्रोजन फ्री हो जाता है। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद होता है वो नाइट्रोजन को फ्री बना देता है, अलग बना देता है। Here we shall learn thoroughly about the fixation of nitrogen by plants and its role as fertilizers, और इसका क्या रोल होता है फर्टिलाइजर का रूप में। Here we will study thoroughly about the fixation of nitrogen stepwise, about its cyclic process. Here let us see. Suppose this one atmosphere, no? Nitrogen present. Okay. Here nitrogen, it is taken up by the plants. Okay. And it is there in the soil. In the form of compounds. Okay. And this nitrogen is taken by the animals. And afterwards, it once again returns back to the atmosphere. About this cyclic process, I am going to discuss thoroughly. Here the first point is nitrogen from air or atmosphere to plants by symbiotic
bacteria. Okay, this is our first step of cyclic process based on nitrogen cycle. Here let you see the plants of Leguminaceae family or leguminous plant you can consider like pea, gram, bean. It takes nitrogen directly from the air for their growth, isn't it? Why and how? Let you see all the Leguminaceae family means the plant species. It has specialized roots. It has root nodules, and in their root nodules there are present nitrogen fixing bacteria like Rhizobium, B. radicicla. This converts the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound and supply it to the plants. तो उसका रूट्स में क्या होता है, जो नाइट्रोजन को सेटल करने का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जैसे कि राइजोबियम, बी, रेडिसिक्ला. वो क्या होता है लेगुमिनस प्लांट में, जो क्लाइंबर जैसा जो प्लांट होता है, जो क्लाइंब करके होता है, जो ग्रेप वाइन होता है या दूसरा किस किस्म का प्लांट जो होता है. It has weak stem. Okay, those plants, its roots, in their root nodules, they are present nodules. Okay, in their root nodules, they are present nitrogen fixing bacteria. Okay, it settles the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. Clear? Now second one is nitrogen from soil to plants. In this step, all those plants which are not belonging to Leguminaceae family, they take nitrogen from the soil through or by artificial manures like ammonium salts, nitrites and nitrates. Okay, those are present in the soil due to rainwater or artificial manures. Here let you see, जो बारिश का बूंदे जब गिरता है, rainwater, it takes the water as well as the minerals together with it at the base of the plants. So the plants, it gets benefited by the flow of the water or due to artificial manures. Here plants convert the nitrogen present in the compounds into complex nitrogenous compound due to the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment that is present in the green plants. Okay, and you can say by the process of photosynthesis. Clear now? So what happens? Here plants convert the nitrogen present in the compounds like ammonium salts or nitrites or nitrates into complex nitrogenous compounds like fruit, grams, peas, all the food items in the form of proteins. So by the process of photosynthesis. Clear now? Now the third point is nitrogen from plants to animals. In this step, animals eat plants and hence proteins in the form of foods. The food or the plants get converted or decomposed into simple organic substances like urea and amino acids in the body of the animals. And the organic substances are either converted into body proteins or excreted in the form of waste products, or we can say nitrogenous products like urine, stool or even sweat. Okay,
तो हम लोग जो खाना खाते हैं प्लांट्स को, उसको डिकम्पोज करता है हमारा बॉडी में। तो डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, वो एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देता है, और वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाद में जाके हम लोगों का बॉडी प्रोटीन्स बनता है। ओके, मतलब हम लोगों का मसल्स, फ्लैश, और इट कैन बी एक्सक्रिएटेड एज यूरिन, और उसको और क्या होता है, ये एक्सक्रिएशन भी होता है, जो हम लोग को बचा कुचा जो होता है वो एक्सक्रिएट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जो हम लोगों का पेशाब का हिसाब से, पखाना का हिसाब से वो निकल जाता है। ओके, एंड नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सॉइल। जो हम लोगों का फोर्थ स्टेप है, इसको ही हम लोग फाइनल स्टेप समझ सकते हैं। एयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सॉइल, बैक टू सॉइल। ओके, और हम लोगों का जो फोर्थ स्टेप है, इसमें क्या होता है, द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल्स एंड द डेड एंड डिकेइंग material of the plants and animals get decomposed by some bacteria, and those bacteria are not an ordinary bacteria. These are nitrogen fixing bacteria. Those are nitrogen fixing bacteria. Okay, so here for those bacteria and for those reaction we have to go thoroughly. So first one is ammonifying bacteria. तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एमोनियम का स्लैट बना देता है। इट कन्वर्ट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू एमोनियम स्लैट्स। सो हियर द वेस्ट प्रोडक्ट वी विल कंसीडर यूरिया। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? NH2CO NH2. When it reacts with water in the presence of bacteria, what it produces? Here, oxygen with this carbon monoxide, it becomes carbon dioxide. Now what's left? Here 2 nitrogen, 2 hydrogen, here 2 hydrogen. So here NH3, here 2 nitrogen, here 2 nitrogen, here 4 plus 2, 6 hydrogen. So 2 3 is 6. This one is ammonia. Okay, next step, it is done by nitrosifying bacteria. Here in this step, the nitrosification of ammonia, it takes place with the help of Nitrosomonas and Nitrosococcus bacteria, and as a result nitrites are formed. So let's see how. तो इधर में अमोनिया ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसका मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनस and Nitrosococcus bacteria. Okay, and it will form nitrites. How? Let you see. Twice NO2 together with water plus hydrogen ion, and it releases energy. ओके, तो क्या होता है, एमोनिफिकेशन जब होता है अमोनिया का, किसका मौजूदगी में कौन करता है? ये नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया। तो हमें नाइट्राइट मिलता है जो वाटर के साथ रहता है, जो एंड हाइड्रोजन आयन आल्सो फॉर्म्स।
together with it releases energy. Okay. एंड और अभी हम लोग हमारा जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप जो है वो देखेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप है यही फाइनल स्टेप है और ये होगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा. ओके, इन दिस थर्ड स्टेप it will be done by nitrifying bacteria. And in this step, the nitrification of nitrites takes place with the help of nitrobacter. Okay, it takes place with the help of nitrobacter, and as a result, nitrates are formed, which are utilized by the plants through the soil. तो नाइट्रिफिकेशन जब होता है नाइट्रेट्स का, किसका मौजूदगी में कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है. और हम लोगों का क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? नाइट्रेट्स फॉर्म होता है जो प्लांट यूटिलाइज करता है मिट्टी द्वारा. ओके, नाउ लेट्स सी द रिएक्शन थॉरोली. हियर लेट अस सी द नाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्राइट्स. NO2 air 2 air nitrites react with oxygen, it forms twice NO3 and it releases energy. तो क्या होता है? जब नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रेट का ऑक्सीजन का मौजूदगी में, ऑक्सीजन इट moderates the reaction. So with the help of nitrobacter. Okay, nitrobacter bacteria. Clear no? तो हमें मिलता है नाइट्रेट्स जो प्लांट यूज करता है, यूटिलाइज करता है मिट्टी में से लेकर. और हम लोग इसे क्यों रेडिकल में लिख चुके हैं एनायन में? क्योंकि ये जो नाइट्राइट जो है ये एक कंपाउंड में मौजूद था, अभी ये वाटर से ब्रेक हो चुका है, तो इसका जो प्रॉपर्ली ये बैलेंस नहीं है, जो बैलेंसी का बेसिस में ये पूरा अनबैलेंस्ड मोड में है. तो इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग रेडिकल नाम देता है, जो आइदर एनायन होता है या कैटायन होता है. तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज नाइट्राइट आयन. और उसके बाद हमें मिलता है नाइट्रेट आयन. ओके नो? दोनों ही नाइट्राइट और नाइट्रेट ये रेडिकल है. ओके नो? द मीनिंग ऑफ रेडिकल यू अंडरस्टूड नो? द मीनिंग ऑफ रेडिकल इज व्हाट? There is a lackings of bonding of the elements or atoms you can consider. That's why nitrite and nitrate both are radical. That's why we have written ion. And that nitrification it takes place for that nitrites. क्योंकि नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही रेडिकल है, तो इसलिए हम लोग उसे रेडिकल फॉर्म में लिख चुके हैं. तो यही है हम लोगों का नाइट्रोजन साइकिल. तो यही है हमारा फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन प्लांट्स द्वारा. क्लियर नो? होप यू अंडरस्टूड. एंड इफ यू अंडरस्टूड then please keep watching my channel Scientific Phenomenal Facts. Thank you.